hi students, can you hear me? Hello. So hi students, hi students, can you hear me? Yes, sir. Oh, thank you. So in the last two or three classes, we were discussing what are the different methods which can be used to reduce the whatsoever the delay will be introduced due to the branch related instructions. And there were four different types of instruction, four different types of methods which we have discussed, which can be used to reduce the delay, that is stall pipelining, predict not taken, predict taken, and delayed branch. So we have already discussed the things in detail, what will be the working or functioning of all these types of methods used to reduce the branch penalties. And now we will try to understand what will be how can we evaluate the performance of branch related schemes. So this will again be almost similar, which we have already discussed during the discussion of the pipeline structure, how the pipeline structure will be able to speed up with respect to unpipelined structure. So during the discussion to evaluate the performance for the pipelined structure, it was discussed that how can we calculate the speed up with respect to the pipeline. So what will be how much speed will be gained or how much speed will be up for a pipeline structure with respect to unpipelined structure. The equation which will be used to evaluate this will be the average instruction execution time of the pipeline structure upon the average instruction execution type of the pipeline structure. So it will be average instruction execution type of unpipelined structure upon average instruction execution time of pipeline structure. So this we have already discussed the things in detail. That is the average instruction pipeline or unpipelined time will be having two components. One will be called CPI of either pipelined or unpipelined into clock cycle time of the pipelined or unpipelined. So if we will look at this, if we write this in terms of CPI and CC, then it will become, this particular equation will become CPI unpipelined into CC time unpipelined upon CPI pipelined upon into CC pipeline. So if we will consider that we are having the CC time is same, let's suppose the clock cycle time, whatsoever the clock cycle we are using, is similar for the both the structure. So then naturally we can say that the speed up of the pipeline structure will depend upon what will be the CPI of unpipelined upon CPI of pipeline structure. So this will be under the ideal condition. So what will happen if some sort of stalls will be introduced? मेरे ख्याल से हम लोगों ने स्टॉल्स के मेथड जब हमने डेटा स्ट्रक्चर या डेटा हजार्ड या स्ट्रक्चर हजार्ड किया था तब हमने इसी इक्वेशन को यूज किया था. दिस वाज again the similar equation. So it is CPI unpipelined upon 1 plus CC of pipeline stall. So this stall will be due to by considering that the branch instructions will be there. Whatsoever the number of clock cycle will be introduced due to the delay introduced or due to the introduction of the stalls when the branch instruction will be executed, that particular thing will become the denominator and it will be CPI unpipelined upon 1 plus CC clock cycle of pipeline stall. Okay, so this can also be written as what? Pipeline depth. As we know that under the ideal condition, whenever we will consider that the pipeline structure is perfectly balanced,
then the CPI or the execution average instruction execution time of unpipeline structure upon average execution time of pipeline structure will depend upon what is the pipeline depth. And what is pipeline depth? It is the pipeline depth will be a term which will be used to indicate the number of stages in a pipeline. अगर कोई पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो है वो 3 स्टेज है तो पाइपलाइन डेप्थ भी 3 स्टेज होगी. अगर कोई स्ट्रक्चर पाइपलाइन स्ट्रक्चर 5 स्टेज है तो उसकी डेप्थ भी क्या होगी, 5 स्टेज की. तो अंडर आइडियल कंडीशन जब हम ये मान के चलेंगे कि हमारी जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली बैलेंस्ड पाइपलाइन स्ट्रक्चर? कि हमारे अगर मान लीजिए हम ये कंसिडर करें कि वी आर हैविंग 5 stage pipeline structure which must be having the 5 different stages. First one will be fetching, second one will be decoding, third is execution, fourth is memory access and fifth is write back. ये 5 के 5 जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, एक इंस्ट्रक्शन जो इन 5 डिफरेंट स्टेजेस में से निकलेगी, अगर इन स्टेजेस का सब इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूशन टाइम फॉर ईच स्टेज विल सेम, देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट? इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड. अगर ये परफेक्टली बैलेंस्ड ना हो तो उस स्टेज का हम एग्जीक्यूशन टाइम एक इंस्ट्रक्शन का मानते हैं जो मैक्सिमम टाइम लेगी. मींस व्हाटसोएवर द स्टेज इज गोइंग टू टेक मैक्सिमम टाइम, ओके, सो दैट पर्टिकुलर टाइम विल बिकम द एग्जीक्यूशन टाइम. उस केस में ये इट विल नो लॉन्गर स्पीड अप, पाइपलाइन विल नो लॉन्गर विल बी रिमेन टू द पाइपलाइन डेप्थ. ओके, तो वो पाइपलाइन डेप्थ के इक्वल नहीं रहती है, फिर मैक्सिमम हाईएस्ट टाइम हो जाता है. लेकिन हम यहाँ पे अगर आइडियल कंडीशन ही माने कि हमारी पाइपलाइन जो है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो देन स्पीड अप विल बी इक्वल टू पाइपलाइन डेप्थ, यानी इस चीज को, एंड देन 1 प्लस सीसी पाइपलाइन स्टाल जो है वो यहाँ पे आए. अब पाइपलाइन स्टाल किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि ब्रांच की फ्रीक्वेंसी कितनी है. मान लीजिए आपके पास 100 इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है और उस इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ब्रांच फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है कि उस 100 इंस्ट्रक्शन में आपकी ब्रांच रिटर्न इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है. अगर वो 100 में से पूरी 100 इंस्ट्रक्शन में से सिर्फ एक ही ब्रांच रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, सो वी विल से दैट द ब्रांच फ्रीक्वेंसी इज 1%. ओके, और अगर हम ये मान के चलेंगे नहीं उसमें 10% है, 10 इंस्ट्रक्शन है, 100 में से 10 बार इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ब्रांच रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है, तो हम मान के चलेंगे कि उसमें ब्रांच फ्रीक्वेंसी क्या है, 10%. तो अगर लेट्स सपोज आप एक प्रोग्राम ऐसा लिखा है जो आपका लूपिंग का है, लूप ही चल रहा है उसमें, तो अगर लूप रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं तो नेचुरली उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होगी कि ब्रांच रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हों. अगेन ब्रांच रिलेटेड इंस्ट्रक्शन विल बी, सम इंस्ट्रक्शन विल बी अनकंडीशनल, सम विल बी कंडीशनल. अब जो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, जैसे हमने डिस्कशन किया कि वो आगे फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी कि एक ब्रांच टेकन और ब्रांच नॉट टेकन. यानी एक ये है कि जिसमें कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रांच टेकन यानी लूप पे जाएगी, दूसरी ये कि जब ब्रांच ट्रू नहीं होगी तो वो लूप पे नहीं जाएगी, यानी वो एक तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगी. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. एंड इनटू व्हाट? ब्रांच पेनल्टी, कि एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से वो कितनी पेनल्टी पड़ रही है, यानी कितना एक्स्ट्रा सीपीसी क्लॉक साइकिल दे रही है जो इसके ओवरऑल सीपीआई को इंक्रीज करेगी. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्पीड अप ऑफ पाइपलाइन? स्पीड ऑफ पाइपलाइन कैन बी कैलकुलेटेड pipeline depth upon 1 plus branch frequency into branch penalty. Okay, so by using this we can calculate the speed up of a branch related scheme. So now we will try to understand this particular problem or this particular technique, how we can evaluate the performance with respect to one example. Let's suppose this is one example. For any pipeline structure, कोई एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लश पाइपलाइन भी है, प्रेडिक्ट टेकन भी है और प्रेडिक्ट नॉट टेकन भी है. यानी तीनों जो फर्स्ट 3 टेक्निक्स हमने 3 मेथड्स हमने यूज किए थे जो के अंदर स्टैटिक the name of that is called also called the static methods. वो स्टैटिक मेथड्स हैं. तो हम ये प्रॉब्लम स्टैटिक मेथड्स पे ही है कि उसमें तीनों की तीनों जो है पाइपलाइन ब्रांच की हैं, ब्रांच हैं, तीनों मेथड्स हैं. फ्लश पाइपलाइन भी है, फ्लश पाइपलाइन भी है,
यानी स्टॉल पाइपलाइन भी है, प्रोडक्ट टेकन भी है और प्रोडक्ट नॉट टेकन भी है। तो ये ब्रांच स्कीम है, फ्लश पाइपलाइन, प्रोडक्ट टेकन एंड प्रोडक्ट अनटेकन यानी प्रोडक्ट नॉट टेकन। तो जो अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन होंगी उसमें, उस पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम, मान लीजिए ये एक डीएलएक्स की बात ही हो रही है, अगर उसमें अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और वो फ्लश पाइपलाइन स्कीम के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, तो जो पेनल्टी पड़ेगी ब्रांच इंस्ट्रक्शन आने से दैट विल बी ऑफ 2। कितने क्लॉक साइकिल की होगी? 2। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट टेकन 2, फॉर प्रोडक्ट अनटेकन 2। अब अगर आप पेनल्टी अनटेकन लो, पेनल्टी अनटेकन अगर इस स्कीम पे जाओ, देन व्हाट विल हैपन, उसमें क्या होगा कि फ्लश पाइपलाइन स्कीम पे जाओगे तो ये गिवन है, दिस इज डेटा इज गिवन कि 3 की पेनल्टी पड़ेगी, और अगर प्रोडक्ट टेकन लोगे तो उसमें भी 3 की पड़ेगी, लेकिन प्रोडक्ट अनटेकन में 0 की पेनल्टी होगी, यानी कोई उसमें पेनल्टी नहीं होगी। सिमिलरली पेनल्टी टेकन अगर लो आप, यानी ये इट इज सिमिलर टू प्रोडक्ट टेकन एंड प्रोडक्ट नॉट टेकन, इट इज व्हाट प्रोडक्ट टेकन एंड प्रोडक्ट नॉट टेकन। तो ये 3, 2 एंड 3 की है, ये दिस डेटा इज गिवन। नाउ व्हाट दे वांट टू ask or will ask to calculate, what we'll have to find out, find the effective addition of CPI arising from the branches for this pipeline structure, whatsoever this pipeline structure is given. Let's suppose we are having a CPU which is following this pipeline structure, and this pipeline structure will gives us what is having the frequency of unconditional, conditional taken and conditional untaken branches are of 4%, 10% and 6% respectively. So what does it mean? The meaning of this is कि जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो भी इसने प्रोसेसर कंसीडर किया है या कंप्यूटर कंसीडर किया है अपनी इस प्रॉब्लम में, उसमें जो अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं उस पूरे इंस्ट्रक्शन सेट में वो है 4%, अनकंडीशनल टेकन वो कितनी है? 10%, कंडीशनल अनटेकन कितने परसेंट है? 6%। और यहाँ पे हर कंडीशन की, हर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन की पेनल्टी भी दे रखी है कि अगर अनकंडीशनल है तो 2, अगर पेनल्टी अनटेकन है तो 3 है, अगर नहीं है तो 3, 2, 3। अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग पेनल्टी यहाँ पे दे रखी है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कि इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन के ऊपर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में जिसमें इतने परसेंट यानी ऑलमोस्ट 20% ब्रांच कंडीशन, ब्रांच रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, उस 20% ब्रांच रिलेटेड इंस्ट्रक्शन में से 4% अनकंडीशनल है, 10% कंडीशनल टेकन है और 6% क्या है? कंडीशनल नॉट टेकन है। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इसके ऊपर एक प्रोग्राम रन करेगा विद दिस प्रोबेबिलिटी तो कितना एक्स्ट्रा सीपीआई लगेगा जो अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस लगना था इस ब्रांच कंडीशन और ब्रांच इंस्ट्रक्शन की वजह से। वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट दिस। लेट्स सपोज this is the given scenario, ये scenario given है, along with what other thing is given, frequency of events। कौन कौन से? कंडीशनल ब्रांच कितने परसेंट है? 4%, अनकंडीशनल ब्रांच, अनटेकन कंडीशनल ब्रांच कितने परसेंट है? 6%, एंड टेकन कंडीशनल ब्रांच कितने परसेंट है? 10%। ये गिवन है यहाँ पे, दिस इज गिवन, तो यही हमने वहां पे लिख लिया है। ओके, तो टोटल ऑल ब्रांचेस कितनी है? 20%। सो नाउ वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट कि कितना एक्स्ट्रा बर्डन होगा, कितनी एडिशनल सीपीआई होगी विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट स्कीम। ये 3 स्कीम्स हैं और हर स्कीम की वजह से कितना एक्स्ट्रा बर्डन होगा इस पर्टिकुलर इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जब स्टॉल पाइपलाइन करोगे तो वो क्या होगा, कितनी पेनल्टी आ रही है अनकंडीशनल के केस में? अगर आप फ्लश पाइपलाइन या स्टॉल पाइपलाइन यूज करते हो तो 2, और कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है इसकी? 4। So what will be the stall pipeline? What will be the, how much extra burden will be there of the CPI? How much extra CPI will be added due to this condition, due to the 4% of the total, and penalty कितनी पड़ रही है? 2। तो ये 4% है और पेनल्टी कितनी है? 2। तो ये कितना आएगा स्टॉल पाइपलाइन? इट इज 0.08। So we will simply multiply 4% with 2 penalty, so it will be 0.08।
सिमिलरली प्रेडिक्ट टेकन के केस में कितनी है, उसमें भी 2 ही है, तो 0.08 ही रहेगा। प्रेडिक्ट अनटेकन के केस में कितनी है, उसमें भी 2 ही है, तो कितना रहेगा 0.08। तो ये एक हमारे पास डेटा आ गया जिसको हम यूज करेंगे आगे कि एक्स्ट्रा सीपीआई कितना इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने एक्स्ट्रा सीपी लग कितने रहे हैं वो कैलकुलेट किया। देन वी विल आल्सो इवेलुएट कि ओवरऑल एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ कितना रहा है अलग अलग कंडीशन में। अगर हम सिर्फ स्टॉल पाइपलाइन करेंगे तो क्या होगा, प्रेडिक्ट टेकन करेंगे तो क्या होगा, अगर प्रेडिक्ट अनटेकन करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा सीपीआई के ऊपर बर्डन पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस कितनी स्लो होगी ड्यू टू दीज कंडीशंस। तो सिमिलरली वी विल आल्सो इवैल्यूएट द ब्रांच टेकन अनटेकन, नॉट टेकन, ब्रांच अनटेकन विद कंडीशन के विद कंडीशन की ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी वो अनटेकन है कि वो जो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और उनकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है, 6%। तो 6% अवेलेबल हैं उस इंस्ट्रक्शन सेट में। और पेनल्टी अनटेकन फ्लश्ड पाइपलाइन या स्टॉल पाइपलाइन में कितनी है, 3%। सो इट विल बिकम 6% into 3, so it will become what, 0.18. Similarly for predict taken it is again 3, so it will again be 0.018। और यहाँ पे predict untaken के केस में क्या है कि अगर predict untaken की स्कीम को हम यूज करते हैं अंडर अनटेकन ब्रांच कंडीशन, देन इट विल गिव्स अस 0 पेनल्टी, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगी। So, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ये पेनल्टी नहीं होगी, so that is why 0 is over here. So similarly if we will go with the penalty taken, अगर हम पेनल्टी टेकन लेते हैं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट कितनी है, किसकी, टेकन कंडीशनल ब्रांच के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। और ये पेनल्टी कितनी होगी स्टॉल पाइपलाइन स्ट्रक्चर में 3, तो ये क्या हो गया 0.3। सिमिलरली फॉर प्रेडिक्ट टेकन इट इज 2, so that is why it is 0.2 and predict untaken it is 0.3। ओके, तो ये है इसकी। अब अगर आप टोटल ऑल ब्रांचेस निकालना हो तो आप ऑल ब्रांचेस भी निकाल सकते हो, वो ऐसे आपकी निकल जाएगी। जो आपने यहाँ पे जो सम कर लिया तो ये आपकी ऑल ब्रांचेस आ जाएगी। ये तो है कि एडिशन ऑफ सीपीआई। नाउ वी विल ट्राई टू एवेल्युएट कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। So we will take this as an input right now. Right now we are having input. If we will go with the stall pipeline, तो CPI अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगी 1, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बर्डन क्या पड़ रहा है 0.08 और उसकी अकरेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4%। ओके, सिमिलरली फॉर अनकंडीशनल ब्रांच कितनी है 0.18 और अकरेंस क्या है 0.6। So by using this we will do what? We will evaluate it. But we will try to evaluate the stalls in the pipeline scheme. The stall pipeline scheme में कितने होंगे एक्स्ट्रा net CPI के comparatively. The total loss in the pipeline due to the branch hazards will be equal to what? 0.04. It is 0.4%. 0.08 ये इसकी probability है जो CPI एक्स्ट्रा लेगी, that is 0.08 plus 0.06 then into 0.18 plus 0.1 into 0.3. So if we will solve it, it will become 0.044, which means if we will execute a program which will be having this much percentage of the branch related instruction in a whole program under the proposed scheme, which is the stall pipeline, then 0.044 stalls will exist in that particular program with respect to 1 CPI. आइडल कंडीशन में CPI कितना होता है 1 और इसमें कितना आएगा 1.044। तो 0.044 जो है एक्स्ट्रा बर्डन होगी, एक्स्ट्रा डिले इंट्रोड्यूस होगी, इसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्रांच रिटर्न इंस्ट्रक्शन विद गिवन प्रोबेबिलिटी। ये तो है केस 1 अगर हम स्टॉल पाइपलाइन स्कीम को यूज करते हैं। अगर हम प्रेडिक्ट टेकन पाइपलाइन स्कीम को अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, नाउ वी विल मूव टू दिस। इफ वी विल गो विद द प्रेडिक्ट टेकन scheme, what will happen in this case, again what will be the total loss in the pipeline due to the branch hazard। अब इस केस में क्या होगा, अनकंडीशनल ब्रांच के लिए अब हमें सबकी सारी ब्रांच के लिए ऑल ब्रांचेस के लिए कैलकुलेट करना है जिसमें अलग अलग
क्लासेस दे रखी हैं। अनकंडीशनल में क्या है 0.04 और प्रोबेबिलिटी 0.08 है, then it will CC will be 0.08 plus 0.06 into 0.18 plus 0.1, ये 10% है तो 0.1 into 0.2। तो अगर हम इन सब का सम करेंगे तो it will become what 0.034 will become what 0.034। so net CPI in this case will become what 1 plus 1.034। तो नेट सीपीआई क्या है 1.034। अगर हम इन दोनों स्कीम्स को एवेल्युएट करें और कंपेयर करें तो हमें कौन सी बेस्ट लगती है this one, because this particular scheme is giving the less delay as compared to this, because the impact of the stalls on the pipeline scheme of this particular predict taken is less as compared to the stalled pipeline scheme. Okay, so this is the way how can we evaluate. Now we will go to the third one. Let me know that what will be the net CPI in case 3. In case 3, what you will do? You will have to go for the predict untaken. You have to go for what? Predict untaken. Okay, so what will be the answer? How will you get it? This will be the answer, and you will have to do what? 0.04 into 0.08 plus 0.06 into 0 plus 0.01 into 0.3, and the total will give us what? 0.332. So now if we will try to compare all three cases, then what will we find? कि पहले केस में अगर हम स्टॉल पाइपलाइन की स्कीम को यूज करते हैं तो हमारे पास जो नेट सीपीआई आता है, नेट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो चाहिए, क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन चाहिए, दैट विल बी नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन चाहिए, दैट विल बी 1.044। और इस केस में क्या चाहिए 1.03। बट थर्ड स्कीम में क्या चाहिए, predict untaken scheme में 1.033। so which one is the better option? Best performance will gives us what? The best performance of the compiler, which will go with what? Predict untaken scheme. So this is how can we evaluate the performance of a processor or a computer with respect to different schemes for the branch instructions to optimize the performance of a processor. So this is all about the control hazard, and next time we will go with the advanced topic, that is the instruction level parallelism, ILP. So this will be advanced level of the whatsoever till now we have discussed. So in this particular thing we will try to understand how overlapping can be done, how the overlapped or overlapping execution of the multiple independent instructions will be there. So it will be related to the independent instruction, how more than one instructions can be performed or multiple be performed, but those must be independent, how overlapping can be done. So this is a topic related to the parallelism. So we will try to understand this in the next lecture. So if you are having any question, can ask. If anyone is having any question, can ask. Yes, anyone want to ask any question? No? So that is all from my side. Thank you. Thanks to all of you. Because I will start the new topic, so I will start the new topic.